we study digital circuits, then we come to know that it operates by digital logic. So to understand the digital logic, we went to the different logic gates, and these are the basic building blocks of the digital circuits. So later on, we find out that the logic gates can be created with diodes and transistors. And now we need to understand the logic. The fundamental theory behind logic means its algebra. So it is called Boolean algebra. When we are trying to understand the logic for these binary numbers 0 and 1, and the way the digital circuits work. So you have already studied linear algebra and something similar kind of things in mathematics and in previous classes. So when we will be trying to understand De Morgan theorems and Boolean's law and Boolean algebra, what you say, then the basic concepts will be useful, but it is very easy and elementary, so you don't need to have any background for such understandings. But it is a similar kind of an algebra. So algebra has some its laws. So we have to go through that laws, and then what it will do, it will help us to simplify logic circuits, digital logic. So, if you have seen papers for like IIT JAM and JS and something, these competitive exams, so you must find some circuit, digital logic circuit, where it is asking you output or simplification kind of thing. So to simplify that kind of questions, to get to the answer, to find out an output of the digital circuit, we need to have a good understanding of Boolean algebra. There are some laws of this algebra, and if you understand these laws, then you can simplify any circuit. So this is what we have planned for today. So let us go to the slides. And this thing is XOR logic gates. So we talked a little bit about, if you remember when we were on this slide, we talked that there was an observation. This is in gate. We haven't talked about its expression and all, but we have seen an observation. If both inputs are same, the output is 0. Both inputs are different, the output is 1. So if you remember in the syllabus, we have to know that XOR gate is a parity checker. Parity checker means parity is that kind of concept. So basically, this is this property that if both signals are same, it gives 0, and both signals are different, it gives 1. So this property is utilized to use XOR gate as a parity checker. So we will go into this later. But let us see some little more information. Let us add some information about XOR gate. XOR gate basically होता है. तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, इन्होंने उस गेट को ये एक NAND गेट लिया है, एक OR गेट लिया है, और एक AND गेट लिया है. 3 गेट लेके बनाया है वही XOR गेट. जो XOR गेट को सिंबल वहाँ पे देख रहे थे. So they have used 3 different gates to create the logic. तो इसका लॉजिक क्या होता है? XOR गेट इज XOR का आउटपुट जो C है ये होगा A and B, A NAND B and A or B. So NAND and OR, you know, these are the operations. So this is an expression for it, and says if you already know this, you can make composite NAND gate, so requiring 6 total. So what it says that you can use a NAND gate. You don't need to have 3 type of gates. You can make OR gate using NAND. You can make AND gate using NAND. So you need 6 NAND gate. अगर तुम्हारे पास 6 NAND gate हो, तो तुम XOR gate बना सकते हो. So that is why NAND gates are universal gates, and this is information. फिर बोला कि जो XNOR होता है, XOR is XNOR. So XNOR is मतलब उसका invert कर दिया गया. So you just put a NOT gate here, it becomes XNOR. Okay. Then this is also called exclusive
XOR means exclusive OR operator. किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहेगा जैसे हम लोग XOR बोल रहे हैं, so it can be seen like that. Otherwise, you say exclusive OR operator. You say I can say exclusive OR logic gate. So this is another name. It is more it's a bit bigger name, so I'm calling it XOR. So it's okay, but to say it properly, it is exclusive OR. अब इसमें एक होता है कि इसका लॉजिक क्या है ये बता रहे हैं A and B is true if A or B is 1, but not when both A and B are 1. तो ये बोल रहा है कि जब दोनों एक जैसे होंगे तो वो उनको इंक्लूड नहीं करेगा, अगर एक दोनों अलग अलग होंगे तभी उसको इंक्लूड करेगा। तो इसको इस सिंबल को ये बोलते हैं, ये शायद अलजेब्रा में तुम लोगों ने एक सिंबल पढ़ा हो, एंड प्लस करके ऊपर गोला बना देते हैं, so it means something, it is not just a plus. तो इस सिंबल को एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी कहते हैं, ये इसका सिंबल है। तो इफ यू राइट आउटपुट देन इट विल बी C is equal to A and this symbol exclusive or you say जो भी इसको कुछ सिंबल को बोलते हैं, I forgot this name, plus जो सर्किट बनाते हैं A and B, that will be the logic for exclusive OR gate. Okay. So exclusive OR gate के बारे में थोड़ा सा information हम लोगों ने add किया, and later on we will talk about how it is a parity checker. Although we have discussed that अगर same होता है तो output 0 आता है, अगर दोनों input different है तो output 1 आता है. So that is a concept being utilized for using XOR gate as a parity. Yeah. So let us move further. Let us try to understand its algebra, which is called Boolean algebra, to get familiar with the logic. अभी हम लोग A, B, C देख रहे हैं, और अगर बहुत बड़ा सा सर्किट होगा, बहुत कुछ होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इस वजह से हम इसको समझना चाहते हैं। अदरवाइज जैसे यही सर्किट है, इसी में देखो कि इसका आउटपुट क्या होगा, फिर इसका आउटपुट क्या होगा, फिर ये दोनों के इनपुट में जाएगा तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। So if you write it and then simplify it, then you will get A plus जो सिंबल बोले exclusive का plus B करके ये सिंबल, उसका आउटपुट इस तरह से बनेगा। So you have to simplify. एग्जाम में ऐसे जनरली सर्किट दिए रहते हैं, उसमें कई सारे गेट रहेंगे और बोलेगा कि आउटपुट इसका क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं, and you have to find out. Then you have to simplify it. You have to use laws of Boolean algebra to get to the answer. Okay. So that is why it is necessary for us to understand Boolean algebra and this basic law. We are going to start this Boolean algebra. So जिससे ये पूरा डिजिटल लॉजिक गवर्न होता है, so उसके कुछ लॉज को हम लोग समझते हैं और कुछ उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। So it is this Boolean operations and expression. So this is a Boolean addition. We have already talked that AND is a multiplication, OR is an addition, but it is not a simple addition multiplication like we do. हम लोगों ने देखा कि एक और एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक हो जा रहा है, और एक को जोड़ रहे हैं तभी भी एक हो जा रहा है. So this is not simple algebra. This is not conventional thing. We know. So this is Boolean algebra. That is why we need to go to Boolean algebra. We have to understand this logic, its fundamentals. तो ये जो है जो और ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं बुलियन एडिशन. अगर हम लोग सिंपली एडिशन बोलेंगे तो जब एक एक को एक कहेंगे तो कोई कहेगा ये तो एडिशन. तो दिस इज द सिचुएशन वेयर यू से यू पुट 1 1 एंड आउटपुट में भी हमको 1 मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम. ये इन्होंने थोड़ा सा उसको लॉजिक से समझाने की कोशिश किया है. यहाँ पर हम ए भी दे रहे हैं और एक्स कैसे आ रहा है, थोड़ा सा ये टाइम भी दिखा रहा है, बट दैट कंपोनेंट विल कम लेटर. हम लोग जब और सीखेंगे. अभी बस ये समझो कि और जो है उसको बुलियन एडिशन कहेंगे. जब एक 1 + 1 को हम 1 कह रहे हैं तो इट इज नॉट सिंपल एडिशन, सो लेट अस कॉल इट बुलियन एडिशन. एंड दिस एंड ऑपरेशन इज बुलियन मल्टीप्लिकेशन, एंड वी नो ऑलरेडी दिस इज द सिंबल फॉर AND gate, OR gate. This is for AND gate. So
So we came to one conclusion that we are going to call it Boolean addition, Boolean multiplication. So that this 1 plus 1 is 1 in Boolean addition. So this is one thing. Now, these are some laws of Boolean algebra. So we have to get this. Algebra में जैसे ये सब laws पढ़ते हैं. I think तुम लोगों ने कभी group theory पढ़ा होगा. Algebra में, linear algebra में group का definition पढ़ा होगा. उसमें बहुत सारे ऐसे conditions आते हैं. और भी कई बार इस तरह का चीजें हम लोग algebra में पढ़ते हैं. तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं एक नया तरह का अलजेब्रा है, इसको बुलियन अलजेब्रा कहते हैं. इसके कुछ लॉ है, उस लॉ को हमको समझना होगा. एंड व्हेन वी विल बी सिंप्लीफाइंग सर्किट्स, देन वी हैव टू use that law. So that is right and important. It is simple, but there are few things. There are few places where you have to be conscious. Like 1 plus 1 is 1 in Boolean algebra. So otherwise, for multiplication, we didn't have to worry about. But there are only two numbers in Boolean algebra, 1 or 0. Any input, whether we are calling A, B, C, X, Y, whatever we are calling, it can take only two values. It can be either 0, it can be either 1. So this is one thing. So on the basis of that, there are some laws. So laws of Boolean algebra, this follows commutative law. So A plus B is equal to B plus A in Boolean algebra. तो अगर A plus B लिखा है, उसको अगर B plus A लिख दे, तो ये Boolean algebra में गलत है. Simple algebra में भी ये गलत है. But जो हम लोग linear algebra पढ़ते हैं, उसमें भी शायद ये सब चीजें रहता है. But कहीं पे कुछ चीजें different रहते हैं, इसलिए हम लोग समझना. ये कम्यूटेटिव लॉ एडिशन का भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का भी फॉलो करता है. A plus B is equal to B plus A and A dot B, AB is equal to BA. So this is one thing. And another is associative law. Associative law of multiplication and addition, it follows it both. So it says A plus, this is within bracket B plus C is equal to within bracket A plus B and plus C. A, B, C is equal to H. So you can see this on a screen, and you already familiar with cumulative law and associative law. And this is distributive law. So distributive law is it follows. So A in bracket B plus C is equal to AB plus C. So these are the simple laws. We are very familiar with these. But at the same time, we will be needing this when we are simplifying logic. So these are the laws of Boolean algebra. Let us go through the few more laws available. अब हम लोग थोड़ा सा ये सीखते हैं. ये 12 rules है, 12 rules of Boolean algebra, and these are very important. It will be useful while simplifying logic. So if there is an input A, you know A, B, C, whatever, it can take only two values, 0 and 1. This is binary number. Boolean algebra is for that. So A plus 0 is A. If there are two inputs where we are giving A and we are giving 0, so the output, if this is being added, the output will be A. This is quite simple. But at the same time, if you say A plus 1, it is always 1. If A is 0, it doesn't bother. If it is 1, then 1 plus 1 is 1. So these are the things, these are the handy things we come into use when we simplify like circuits. It's fun to simplify a lot of exercises, but at the same time, you have to understand this. You have to grasp these laws. Otherwise, you can't. This can't be mug up things. You can mug up things and simplify logic. Then A dot 0 is 0 and A dot 1 is A. Means this is multiplication. Dot means multiplication. A plus A is A. A plus A bar is 1 always. So A can take value 0 or 1. So if you take 0, this will be 0, this will be A bar means invert. Whenever there is a bar, you know it is invert, it is not gate, not operation. So A, if it is 0, then it becomes 0 and this becomes 1, and 0 plus 1 is always 1.
and if it is 1, then it becomes 0. 1 plus 0 is always 1. Okay. And similarly, if a dot a bar is always 0, इसका वैल्यू चाहे 0 हो चाहे 1 हो, ये हमेशा 0. और उसको अगर किसी को 2 बार इन्वर्ट कर दे, a bar and then again bar, means 2 times not operation, you will get the same number. So a double bar is equal to a. Then see, this is very important. A plus ab is equal to a. How? Let us try to understand. If we can take a out of a, take हम लोग इसको a को कॉमन ले सकते हैं. So we can write a 1 plus b, and 1 plus b is b का वैल्यू कुछ भी हो, जब हम a plus 1 करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है ना. 1 plus b will be always 1. So जो हमने कॉमन लिया था वही रह जाएगा. तो a is equal to 1. It means a बचेगा, a dot 1. So this is a. That is why we are writing a plus ab is equal to a. I hope you understand this. A plus ab bar, this is equal to a plus b. And a plus b, a plus c is equal to a plus bc. तो ये सारे जितने भी rules है, either you understand it. If you understand it, very good. If you don't understand it, what you can do, जैसे भी जो भी लॉ है उसमें a b जितने भी वेरिएबल्स है उसका वैल्यू 0 या 1 हो सकता है. You try to put with these numbers. Just put, जैसे ये है, इसमें हम a b c का कुछ वैल्यू ले लें, and you can see and you can verify it. Verification is very simple. One time you put 0, one time you put 1. There are only 2 possibilities, and if logic sustains, it means logic is correct. So ये कुल मिला के 12 रूल्स है बुलियन अलजेब्रा के, और ये रूल कहीं अलग से नहीं आते हैं, इनका भी सिंपल लॉजिक है. हम लोगों ने सारे लॉजिक को एक तरह से समझा है. सो इसमें जो भी वेरिएबल्स है उसकी वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, either 1 or 0, and you should try all these numbers. You can try all these numbers with putting the values of variables, and so this is the way. These are the basic laws for Boolean algebra. So this and this. तो इसमें क्या है, बहुत कुछ नया नहीं, बट थोड़ा सा डिफरेंट. जैसे तुम लोगों को ये सारे लॉज काफी कुछ पहले से ही पता है, तुम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है और भी बहुत सारा मैथमेटिक्स किया है. सो इट इज नथिंग, बट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव टू बी कंसर्न. तो मैंने यही बताया कि कई बार क्या होता है कि ये इतना सिंपल होता है कि बच्चे इसको बहुत इजी ले लेते हैं, एंड दे डोंट थिंक कि वो क्वेश्चन होगा नहीं, और फिर एग्जाम में जाके उसको कुछ थोड़ा सा गलत कर देते हैं, बाद में वो बहुत मतलब बैड फीलिंग आता है. तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. यू शुड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन दैट, सो दैट यू डोंट लूज दैट इजी मार्क्स. कुछ कठिन होता है, नहीं होता है तो उतना बुरा नहीं लगता है. जब कुछ इजी चीज गलत हो जाती है तो दिस मेक्स रियली बैड फीलिंग. ओके, फिर अभी 2 थ्योरम्स है. इन थ्योरम्स को हमको समझना पड़ेगा. दे आर वेरी यूजफुल इन डीलिंग विद बुलियन अलजेब्रा. बुलियन अलजेब्रा में ये इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, और सिंप्लीफिकेशन में इनसे बच के कहीं जा नहीं सकते. सिंप्लीफिकेशन में ये चाहिए ही चाहिए. हम लोग अभी बुलियन थ्योरम को प्रूव करने का कोशिश ना करके जस्ट एक स्टेटमेंट पुट करने का कोशिश करें. तो बुलियन थ्योरम एक 2 स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ऊपर वाले जैसे देखो तो a इन x y बार इज इक्वल टू x बार प्लस y बार. सॉरी, एक्स वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई. तो क्या हुआ, ये दोनों पे पूरा नॉट ऑपरेशन था. अब इसको यहाँ पे गेट में समझेंगे अगर तो बहुत बेटर तरीके से समझ. और यहाँ पे भी देख लो, इधर एक इन्होंने टेबल बनाया. तीनों चीजें हैं, इनको हम लोग समझेंगे तो आई थिंक यू डोंट नीड टू हैव एन प्रूव करने के लिए कुछ लिख के जरूरत नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी एबल टू.
सो लेट अस सी ये क्या है, एक्स वाई बार, एक्स वाई मीन्स ये इन लोग का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एक्स वाई का, और उसका बार है मतलब उसका इन्वर्जन भी हो रहा है। सो इफ यू सी दिस इज एन नैंड गेट, उसमें एक्स और वाई हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, ये नैंड गेट है तो ये मल्टीप्लाई करेगा, उसको इन्वर्ट भी करेगा, तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, इन्वर्ट किया। तो जो लेफ्ट साइड में हम लोग इक्वेशन देख रहे थे उसका लॉजिक ये सर्किट ये है, ठीक है। सो दिस लॉजिक सर्किट इज इक्वल टू दिस लॉजिक सर्किट, दिस थ्योरम से। नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस लॉजिक। दिस इज एन ऑर गेट, बट उसको उसका यहाँ पे जो डॉट लगा इसमें नॉट गेट, तो क्या हो गया निगेटिव ऑर गेट, और यू कैन से जो सिंबल्स है उसको पहले से इन्वर्ट किया, एक्स बार, तो हम लोग को यहाँ एक्स दिए और नॉट गेट पहले ही लगा दिए तो हो गया एक्स बार। यहाँ पे वाई गेट दिए, वाई दिए उसको नॉट गेट से इन्वर्ट कर दिए तो ये हो गया वाई बार। एक्स बार वाई बार इसके इनपुट में जा रहा है, और जो और गेट होता है वो क्या करता है, वो उसको जोड़ देता है। तो क्या हो गया ये एक्स बार प्लस वाई। और जो डिमॉर्गन का थ्योरम है, पहला थ्योरम ये कहता है कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, दोनों एक ही, whether you use a NAND gate, whether you use a negative OR gate, both are same. तो x y bar is equal to x bar plus y bar। अब ये कैसे है, what we can do, हम लोग यहाँ पे तो एक्स वाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी एक्स वाई दे रहे हैं, आउटपुट में जो आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पे 0 1 से वेरीफाई कर लेते हैं। दिस इज दैट इज व्हाई इट इज वेरी सिंपल इन बूलियन अलजेब्रा, बिकॉज़ यू हैव टू वन इनपुट का दो ही वेरिएबल है, या तो 0 है या तो 1। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है एक्स वाई, और एक्स वाई के सारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हमने लिख लिए। इट कैन बी 0 0, इट कैन बी 0 1 1 0 1 1। ओके, नाउ लेट अस सी कि इसमें आउटपुट क्या आता है, इसमें आउटपुट क्या आता है। अगर दोनों में सेम आता है इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा दिस थ्योरम इज करेक्ट। सो व्हेन वी गिव 0 0, व्हाट यू गेट हियर, 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इन्वर्ट लेंगे तो 0 और उसका इन्वर्ट 1, तो ये हो गया 1। जब हम 0 0 दे रहे हैं तो एक्स वाई वाई बार इज 1, एंड यू सी हियर यहाँ पे हम 0 देंगे, इसका इन्वर्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 1। So again you got this here. So it means for this 0 0 condition these both are same. Similarly you see 0 1, 0 1 जब दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने 0 दिया, यहाँ पे हमने 1 दिया, तो 0 1, 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर उसका इन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। So we got 1 here, so it is here, and this is 0 1। तो यहाँ पे हमको आउटपुट में एक्स बार वाई बार लिख रहा है, एक्स बार 0 है तो एक्स बार 1 हो जाएगा, वाई बार 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 इज 1, सो देयर इज 1। सिमिलरली यू कैन सी 1 0, अब 1 1 के लिए चेक करते हैं एक बार, 1 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 1 into 1 इज 1, और उसका इन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, एंड सिमिलरली एज 1 का इन्वर्ट 0, 0 प्लस 0 इज 0, तो ये 0। तो हमको जितनी चार पॉसिबिलिटीज थी डिफरेंट कॉम्बिनेशन के, हमने चारों पॉसिबिलिटीज चेक किया, एंड वी गॉट दैट दिस इज एंड दिस इज सी। तो हमने अभी कहीं पे जाके प्रूव नहीं किया, कहीं पे लिखा नहीं, कहीं कॉपी पन्ना यूज नहीं किया, बट बाय जस्ट लुकिंग एट इट एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थ्योरम वी कुड प्रूव इट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब थोड़ा सा। Then there is another theorem. This theorem is x plus y bar is equal to x bar y bar. ये दूसरा थ्योरम है डिमॉर्गन का। ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सिंप्लीफिकेशन में इनकी बहुत जरूरत पड़ी। तो इसमें क्या करें, ये इनका स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, अलजेब्रिक स्टेटमेंट क्या है, x प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार। अब हम लोग को इसको लॉजिक में देखना है, तो यहाँ पे एक नॉर गेट यूज किया। नॉर गेट में हम एक्स वाई जब इनपुट में देंगे तो आउटपुट में एक्स प्लस वाई बार में वी गॉट दिस लेफ्ट साइड। फिर यहाँ पे नेगेटिव एंड गेट यूज किया, मतलब एंड गेट में जो इनपुट है वो पहले से इन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव एंड गेट। तो
अभी 1 मिनट के अंदर हम लोग का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू ज्वाइन बैक। सो एक्स एंड वाई इसको इन्वर्ट कर देंगे तो हो गया एक्स बार वाई बार, और इंडिकेट क्या करता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया एक्स बार वाई बार इसका आउटपुट। तो ये दोनों सेम है, ऐसा डिमॉर्गन कहते हैं। डिमॉर्गन कहते हैं कि एक्स प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार। सो व्हाट वी कैन डू टू प्रूव इट, वी अगेन मेक ए टेबल इनपुट का और एक्स वाई के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखते हैं और इसके आउटपुट का वैल्यू और इसके आउटपुट का वैल्यू देंगे। तो इसका आउटपुट 0 0 देंगे तो क्या होगा 0 0। सो 0 प्लस 0 मीन्स 0 और उसको इन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1। सो आउटपुट वी गॉट 1। एंड हियर इफ यू सी 0 का इन्वर्ट करेंगे तो 1, 0 का इन्वर्ट करेंगे तो 1, 1 into 1 is always 1. So this is 1. So similarly you can do all these remaining. So it means Demogorgon's theorem. There are two theorems. You have to know these theorems. You have to use it, and they are very important. X y bar is equal to x bar plus y bar, and x plus y bar is equal to x bar y bar. So these are two theorems. We have understood it, and we verified it using table, और उसका लॉजिक सर्किट बताया और उसका अलजेब्रिक स्टेटमेंट बताया। So I think this De Morgan theorem you understand.